So hello students, welcome to my channel, and today we are going to see the establishment of company's power. That is second chapter, its standard. So before that there is a timeline. You have to read that timeline and note all the centuries in your book and remember it. So next we start the chapter. In this chapter we will study about the wars of East India Company to establish itself in India. So the industrial revolution in Europe and the discovery of new sea routes led to the settlement of trading companies in India. As all these trading companies were profit oriented, they started a period of the mercantilism. So in this chapter we are going to see the wars between the East India Company, whatever the East India Company has been done the war for the establish itself in the India. So what is the industry revolutions beginning in Europe and discovery, how we have already seen how the new sea routes discover. We know that Vasco da Gama. Then the settlement of trading companies in India, as all these trading companies were profit, whatever the profit they have, and how they started mercantilism. So let all things we are going to see in this chapter. Mercantilism and trade wars. So mercantilism and trade wars देखेंगे. The mercantilism was a profit making economic policy. ये एक प्रकार की प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसी थी जो ट्रेड जनरेट कैसे करते उस तरह की ये प्रॉफिट ये थी. During the time the 16th 18th century, all the progressive European countries wanted to make profits through trade. All the progressive Europeans, जो भी European countries थी, they want to make the profits through the trade. So how? Let me see. It was understood that a country could progress if it is produce more than its consumption. So how it will be possible? Then it will be produce a lot of trade and lot of materials, and when they import and export with the means where they were doing this trade with the countries, other countries. So hence the countries started exporting more imported raw material at cheaper rates for profit. तो the countries started exporting और more imported raw materials. तो जो भी cheaper rates में वो profit कमाने के लिए cheaper rates में वो बेचा करते थे. Thus the race to profit led to the monopoly in trade and trade wars. तो जो भी है उनके बीच में एक रेस चालू होगी ट्रेड की. जैसे अभी बिजनेस करते हैं हम, जैसे अभी भी बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है गाइस, तो उसमें भी हम बहुत सारे ट्रेड यूज़ करते हैं बिजनेस में. अभी भी रेस होती है, उसी तरह से वहाँ पे भी रेस हुआ करती थी. दैट द प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसी और मर्केंटिलिज्म लेड टू मोनोपोली इन ट्रेड एंड ट्रेड वार्स. तो मर्केंटिलिज्म के द्वारा उनको बहुत एक एकाधिकार अधिकार मिल गया कि ट्रेड में भी मिल गया और ट्रेड वॉर्स में. यानी ये जो ट्रेड वॉर्स बोले तो मतलब बिजनेस वॉर्स हो गया एक प्रकार का, कि मैं आगे जाऊंगा तू पीछे रहेगा. तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वर इस्टेब्लिश्ड देयर. So now we'll see the trade wars. What is trade wars actually? So trade wars, I have already told you that what is trade wars and whatever that. Leading European nations that involved in trade wars, which were the nations involved in trade wars, that is given here. That is in India. So we are talking about India because we are seeing the East India Company. We know that very well about the East India Company. How the East India Company they established their trade itself in India. So that we are going to see here. The leading European nation that involved in trade wars in India were, underline guys, Holland, Portugal, England, France, and the East India Company of the England emerged victorious. तो ट्रेड वार्स में जो वार हुआ था, इनका ट्रेड वार जो एक मर्केंटिलिज्म के प्रॉफिट द्वारा, एक इकोनॉमिक पॉलिसी द्वारा, तो ये जो लोग थे इनकी विजय हुई, मतलब इनको ये विन हुए उसमें. तो देखते हैं कैसा करना है. बाय द 17th and 18th century, यूरोपियन सैंक ईच अदर शिप. यूरोपियन सैंक मीन्स डुबाना, एक में के शिप डुबाते थे, ब्लॉक करते, सी रूट ब्लॉक कर देते थे, debarred मूवमेंट्स ऑफ सप्लाईज ऑफ द राइवल्स.
मतलब यूरोपियंस की जो शिप थे वो पूरे एक मेक के शिप जो है डुबा देना, रास्ता ब्लॉक कर देना, हमले करना, लूटपाट करना, ये सब चीज़ें होती थी। तो फोर्टिफाई द सेटलमेंट, उन्होंने एक मजबूत सेटलमेंट बनाया। 45 मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग। यूरोपियन ट्रेडर्स वर एट लॉकरहेड्स विद द लोकल रूलर्स। सो यूरोपियन ट्रेडर्स वर एट मीन्स आपस में वो एकदम भिड़ गए थे, मारपीट हो गए थे, मीन्स फाइट, दे वर फॉट बिटवीन देम फॉर द ट्रेड। मीन्स यूरोपियन ट्रेडर्स, जो भी यूरोपियन के जो बिजनेस मैन्स थे, बिजनेस ट्रेडर्स थे, वो आपस में भिड़ गए, किससे? लोकल रूलर से। लॉगर हेड्स मीन्स आपस में भिड़ना, ठीक है। यूरोपियंस, सॉरी, later the Portuguese, the Dutch and the Danish were eliminated from the trading enterprise with India. So डच एंड जो डानिश, जो एक प्रकार के जो ट्रेडर थे, वो जो है हॉलैंड के, यानी कि डच यानी जो जो लोग थे हॉलैंड के लोग थे, तो उनको उनको हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। कहाँ से? इंडिया से, इंडिया के ट्रेड से एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। ये था ट्रेड वार्स तक, ठीक है। लेट वी सी द वन बाय वन द व्हाट एवर द ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। तो द पोर्तुगीज ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया, द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश ट्रेड लिंक्स विथ इंडिया। ये पहली कंपनी थी इस्टेब्लिश हुई थी, ट्रेड चालू किया था इंडिया में। These trading posts or centers set up by the trading companies came to be known as factories. So they established the factories also. Over time, these factories were also set up as the residential quarters of the trading merchant, and later they were fortified. So तो उसके बाद उन्होंने एक मजबूत क्वार्टर्स भी बने, और वो उस जगह पे मजबूत तरह से, स्ट्रॉन्ग से हिसाब से वो वहाँ पे स्थापित हो गए, ठीक है। After the Portuguese, the Dutch, the British and the French also set up their trading post in India. So after that, the Portuguese, the other countries were also established their trade in India. So British was also there. They also established their trade in India. So let me see. The Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea routes to India in 1498. Remember guys, and mark it. The Portuguese established their control over Calicut, Cochin, Goa, Daman, Diu, Basseins and Salsette on the western coast of India. Underline that. But later on, the coming in trade, fray means युद्ध, ट्रेड का मैदान, जो मतलब बिजनेस, व्यापार का मैदान बोलेंगे, ट्रेड, फ्रे मीन्स मैदान, ठीक है। Of the British and the Dutch, their possessions were reduced to confines in Goa, Daman, Diu by the end of the 16th century. Dutch their possession उनका reduce होने लग गया गोवा में, ठीक है। So the Dutch East India Company, let we see. Dutch were the people of the Holland. मैंने already बताया था आपको, डच जो हॉलैंड के पीपल्स थे, डच। The Dutch East India Company was formed in 1602. डच की जो कंपनी थी वो कब फॉर्म हुई थी? इन द सेंचुरी ऑफ 1602. रिमेंबर गाइस, इसको रिमेंबर करना है, जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ उसको रिमेंबर करके रखना है, दिमाग में डाल के रखना है। और जब भी आप इसका आंसर्स लिखोगे, क्वेश्चन आंसर लिखोगे, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। सो प्लीज लिसन केयरफुली and mark that what I am giving to you. To trade with India and the other countries of the East, their main trading center in India were Trancabo in Tanzo district of Tamil Nadu. तो एक Trancabo एक ये है, जगह है इन टांजो डिस्ट्रिक्ट में। इनका जो मेन जो सेंटर था ट्रेडिंग का, ट्रैंक्यूबर, जो भी एक तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है तांजो, वहाँ पे बनाया है। सेरामपुर इन बंगाल, नागापट्टनम, सिंसुरा, पटना, बेलसोर, कोचिन, सूरत, ये सब जो चीज़ें हैं, मसलीपट्टनम, ये जो है इन्होंने इनके मेन सेंटर यहाँ पे हुआ कर, किसके? डच के, यानी कि हॉलैंड के जो ट्रेड थे उनके, ठीक है। बाय मिड
middle of the 18th century, their colonial possession were taken over by the British East India Company. So by the 18 means middle of the 18th century, what happened? Some colonial possession was be taken by the British, means the East India Company. British के ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, यानी कि उनको जो भी उन्होंने स्थापित किया था, ट्रेड दिया था, ब्रिटिश लोगों ने उनसे वापस ले लिया, मतलब ले लिया, उनका छीन गया. So Danish East India Company, let me see. The Danish East India Company was formed in 1616. So remember guys, Danish East India Company का form हुई है in 1616. They set up the settlement at Tranquebar in Tamil Nadu, Srirampur in Bengal, but had to sell them to the East India Company by 1840. तो by 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने सेल कर दिया, जो भी उनका जो ट्रेड उन्होंने जो सेटअप किया था वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया. द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, लेट वी सी. द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म इन 1664 में ये इसकी स्थापना हुई. तो अनलाइक द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज अ प्राइवेट वंचर्स मीन्स ऑल्सो द व्यापार, द बिजनेस, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ओन हो गई और डेट इज कंट्रोल बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट. सो उस पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार नहीं था पहले, ठीक है. तो फ्रेंच गवर्नमेंट के हिसाब से वो चलते. सून टू कंप्लीट विद द ब्रिटिश एंड द डच companies, the French companies made a flourishing business. The flourishing means erecting their business itself and established their factories, and they established French company that is established their factories that is in at Surat, Mausolepatanam, Pondicherry, that is now Pondicherry, Chandranagore, Mahi and Karaikal. So this type of things is there, so very easy, and you have to be known the means year. We have to know the year exactly when the companies, when it has were been established, so that we have to remember very well. So I hope you understood it very well. So read it once again, and whatever that you have not, you can ask me anytime. So if you didn't subscribe my channel, so subscribe my channel first, and like, comment, whatever you have doubts you can comment me. I will definitely solve your problem. So this is part 1. तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके पार्ट का हम बाद में देखेंगे, ठीक है. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ एंड स्टे होम.